everybody wants to listen is Operation Sindoor. It is a very good decision to have a pause. Message jaichi. That message is not only for Pakistan. It's a big message to Bangladesh. It's a message to China. एबे समान जानी चंती कि आमे जदि इमती किसी करियो हम पूरा आसिक बम पड़े. केबे inspiration ता आसिला Air Force join करिया पाई and how was the story? Not yet 16 when I left for NDA. But then one thing that takes you on is if 300 more people are doing, मैं किस खेत का मूली हूँ? What happened in Kargil? Musharraf had prepared very well, but what he had made a big mistake is कि कभी भाभी नतला India Air Force use करियो बोले. I have myself dropped about 39 bombs. Any specific incident कि say training रे कि डरो लागिला? One fine day we got airborne and one of my roommates he never came. मैं instructor को बोली सर मैं और flying नहीं करूँगा. Missiles were from Israel, but the circuitry was from US. Aircraft was Russian. The pilot was Indian. How did that Jugaad happen? At the end of it, safety of aircraft also is important when you do this Jugaad. But for the Kargil issue, particularly a special clearance was given. Once you join Fauj and go around, you no more a Odia actually. Yeah. You eat everything. Kargil may be the first war you faced. What was your family going through? Probably our families are also used कि every day जो जाऊँ there is a possibility he will not come back. Namaskar and welcome to one more episode of this podcast. Aji our guest got a different background and I believe be it business, be it war, be it any phases of life, people and person from Army, Air Force or Navy are the real war heroes. The challenges they face in life and the challenges they face in real wartime situation, ताठू आमे जदि inspiration नहीं परिबो ताठू भलो किछि नाही. आजी आम संगरे अछंती Air Marshal Dilip Patnaik, who retired from Air Force in 2022. He was probably the first Odia gentleman to become the Air Officer Commanding in Chief, Eastern Air Command, and it is an honor for us to have him here in the podcast. Thank you, Uncle, for being part of this podcast. It's really an honor. First of all, thanks from us, from my family, from my friends, from this whole production team to serve our country. I think everyone, whoever meets a person who's from Army or Air Force should at least do a small thing to thank him for the service he did for the country. So, आपण तो जानी चाहती ये podcast विषय रे आपण देखी चाहती. We would like to start from your life story कि केबे inspiration ता आसिला Air Force join करिया पाई and how was the story, how was the struggle. Then we would continue and know about the Kargil War and the Vayu Sena Gallantry Medal and everything. So please, it's all over to you. To start with, my father, se thile central government employee thile. He was posted at Delhi. That is where I was born. After that, we shifted to a place called Jagdalpur, Bastar district. So I spent part of my very young childhood there, and up to class 3, Musedi Podichi. Then I came to Bhubaneswar. Not me, means my parents came, so I had to accompany them. Asiki 81st, I studied for 3 years. Koti? DM school, demonstration multipurpose school, fantastic school. From class 7, I moved to KV, that is Central School. KV1. We have a good set of friends, your father being one of them, and we have Hussain, we have Gurcharan, Vatanu Guru, Biren Padi, Budip Manti. So we've all grown up together, so the other classmates. Atanu Guru actually after class 10, he went to Ravenshaw College and from there he appeared for National Defence Academy and he told ki how good National Defence Academy. So this was 78? 76, 77. 77. So Seti Wale Kon ala ki like it happens to any of us, you just want to
get it over with, पढ़ाई शढ़ाई नहीं करना है. So that vision was there in my mind कि एक बार फौज ज्वाइन कर लो तो पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं, आराम से थोड़ा भागना दौड़ना पड़ेगा and then you can join. So I saw him, then two of other classmates, one Susan Jain. Atanu uncle joined a year before. He joined a year before, then we also appeared, passed. Tapre we joined National Defence Academy. Puthi? In Pune. Pune, Kadakwalsa. Kadakwasla. ମୁଁ ଯେବେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ଗଲି ସେତେବେଳେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ୱାଜ୍ ଏ ଭେରି ୱେଲ୍ ନୋନ୍ ଫେସ୍. ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଥିଲା, କାନ ଉପରେ ବାଳ ଥିଲା, 44 ଇଞ୍ଚର ଫ୍ଲେୟାର, 5 ଇଞ୍ଚର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସାଣ୍ଡେଲ୍ସ, ଏମିତି ହେଇକିରି ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି ଏନ୍ଡିଏ. ଫର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ନାହିଁ, ଏମିତି ଏମିତି କରି କାଟନ୍ତି, ସେ ଜଷ୍ଟ ଫର୍ଷ୍ଟ ଡେ ୱାନ୍ରେ ସେ ସବୁ ଲଣ୍ଡା କରିକି ନା ଆଜିକାଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଇଯାଇଛି କମ୍ ବାଳ ରଖିବା. ସେତେବେଳେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ବିଗ୍ ସକ୍ कि फ्रॉम मैंने गली का हीरो जैसा घूमता था, बट सडनली हियर आई वाज विद नो हेयर इन माय हेड एंड द शॉर्ट्स एंड यूनिफॉर्म थिंग्स लाइक दैट, running around as if there is no tomorrow. 77. 78 on 79 onwards joined. So that's how life has been as far as me joining my schooling and joining the NDA. Training re kaun hela? In National Defence Academy, training is mostly they teach you how to deal with colleagues, they teach you how to be a good officer, and most important is they teach you all facets of discipline. In the 6th term, it is a service specific, wherein Air Force Visare, they tell you little bit, and this is the first time you do flying. Oh. Our time there used to be gliders. Jota sikhonti. So glider that pulls you in a winch and you go up and then go around, do a little bit of controlling. That is how NDA went. It's a mixture of all happy days, difficult days, and staying away from the home for the first time. In fact, not yet 16 when I left for NDA. There are times you feel कि बहुत हो गया, I can't take it anymore in the terms of how Training tough it is. I get. But then one thing that takes you on is if 300 more people are doing, मैं किस खेत का मूली हूँ. So if they can do it, I will also do it. So that pace goes over and next day again you are in a happy situation. So you say, ठीक है, carry on. So that is how the NDA went. But after NDA, we have something known as for pilots. We go to Air Force Academy. As luck would have it, सेतिवेले Air Force decide करिला first stage of training रे ही directly jet aircraft रे fly करो. Oh wow. माने आपण first batch थिले जी. हमर first batch थला. तागरु propeller aircraft रे fly करूथले. It was a much slower aircraft. हमर 133 pilots course सेटा होची first course to go in jets. जेहेतु सेटा फर्स्ट कोर्स थिला, इट वाज फर्स्ट फॉर द एयर फोर्स आल्सो. माने सेमाने भी जान नथले कि हाउ टू स्टार्ट डीलिंग विथ पीपल जो कि फर्स्ट डायरेक्टली जेट्स को आछंदी. तार होची मिनिमम स्पीड थिला फॉर टेक ऑफ स्पीड 105 नॉट्स व्हिच इज अबाउट 170 किलोमीटर्स. हमें फ्लाइंग करिके आसलु ग्लाइडर रे, तार मैक्सिमम स्पीड थिला 60. सबुटो डर या थिला कि जति मु flying रे क्लियर करिबिनी तो आई विल गेट ग्राउंडेड एंड नॉट बी एबल टू फ्लाई. टिल यू एक्चुअली स्टार्ट फ्लाइंग, दैट मोटिवेशन जदि 30% थिला, देन तमे जदि सांग मानको देखुछो फ्लाई करूछनी, देन इट गोस टू अबाउट 80-90%. हां, मु भी गोटे दिन फ्लाइंग करिबे. से दिन रे एयरक्राफ्ट सामने रे कॉस्ट ऑफ द जहाज लेखा होता. दिस एयरक्राफ्ट कॉस्ट सेति वाले it was 2 crore 10 lakhs. I mean 81 re. 82, 83 re. Pride was there कि you can sign for 2 crore 10 lakhs and government has authorized you to take off with an aircraft is 2 crore. That I'm talking about 1983. 108 जन आमे start कर लो. You can't even imagine how many finally passed out. Okay, how many? 46. 62 were rejected. यदि हमारा प्रथम कोर्स न था एले मे बी मोर इट वाज सीन लेटर. एयर फोर्स ऑफ द एक्सपीरियंस नथला, हमें तो एज सच जीरो एक्सपीरियंस 19-20 years. सो 15टा सर्टी करला पर यू हैव टू गो सोलो. सोलो मीन्स यू आर ओनली अलोन इन द कॉकपिट, नो वन एल्स. एंड द कॉकपिट जोटे कि कैप्टन बसे सेटा खाली थाए, सेटा बांधी दियंते सेटा को फॉर एवरी चेक. इट्स पार्ट ऑफ द रूटीन. प्लीज कन्फर्म सर, प्लीज कन्फर्म सर, प्लीज कन्फर्म सर.
मैंने checks left to right checks करला वाले please confirm sir. The first time तमे check करो and you are not getting confirmed from a teacher, that instructor. So it's a different feeling altogether. I don't remember the date, but it's a great feeling. Not because of anything, because you are one of those 40 odd people who have made it to the first phase. That is how the difficult days were. It's a combination, many things. तमे पढ़ा भी चले. I must come back to the fact that तमे जो भाभी कि फौज रे गला पर पढ़ियो बट आई मस्ट वार्न पीपल हु थिंक दे आर जॉइनिंग फौज इवन लास्ट डे रु 10 दिन आगर बंद मते पढ़ियो पड़थला कमिंग बैक टू द एएफए डेज हमें 48 जन पास आउट कलु 48 भितरे तापरे देन से माने डिसाइड करंती कि काकू फाइटर मिलिवो काकू ट्रांसपोर्ट मिलिवो आ काकू हेलीकॉप्टर मिलिवो दैट्स ओनली वी कॉल इट ट्राइफर्केशन ओके. So you have to give option ଦେଇଥିଲି. It just so happened that out of 48, 14 ଜଣକୁ fighter ମିଳିଥିଲା ସେତିକି. I was one of those 14 people. That's how I moved. So now the second phase happened. ଆମର posting ହେଲା again from Kiran to MiG-21s. That is again बहुत बड़ा jump. बहुत बड़ा really बड़ा jump. MiG-21 रो अलग टाइप अच्छी टाइप 77, टाइप 75, टाइप 96. So the training which we did was in the type 77. Type 77, the jump is from 200 kilometers to 340 kilometers takeoff. So Tejpur ଯାଇଥିଲୁ ସେଇଠି the training is for 1 year. There everything is high speed. ଏଇଟା everything ମାନେ everything. Because landing speed is 340 ମାନେ ବାବ. And the first sortie मते मन अच्छी कि टेक ऑफ इतने जोरे मैंने धक्का लगी टेक ऑफ करे because first time I have just released the work he is telling undercarriage up means you are so much behind the aircraft जाइकरी 340 किलोमीटर लानी your mind is slightly slower. That is what you have to be ahead of the aircraft. सदाळे aircraft आगरे that is what you learn as a fighter pilot कि जहाँ होची you have to be ahead of the aircraft. So from behind the aircraft, dhire with progress, you go ahead of the aircraft, you go well ahead of the aircraft. See, that is what our Air Force training is all about. And it applies for day-to-day life also. For example, tamu jodi kuai chi ki tame 5:45 re asibo. As a good Fauji, yes, I was on time. Yes. And I'm glad you are also on time. Thank you. that is what is discipline all about. So, similarly in business also, somewhere you have to be ahead of your competition, ahead of yourself. Ahead of the curve. Ahead of the curve, yes. That's how you mix. If in the business re, you don't factor imponderables. खाली जदि ए जिनस होगला ये माल ना आसला ये जिनस ना आसला एतिकी मोर क्लाइंट्स ना आसबे what do I do? And your mind has to be very clear. Yes. And second is just in case something wrong happens. Like आमे Air Force रे कौन करू something wrong, your mind is already set कि गोटे इंजिन फेल हेले मते ये काम करियर अछि गोटे इंजिन रे चले हो दीटा तक इंजिन फेल कले मते कौन करियर अछि ने सिमिलरली बिजनेस रे तमे जो कैटर करिया पड़िवो आगरु भाबिया पड़िवो तमे जो लास्ट मिनिट किछि गोटे सिचुएशन हे गला और तमे एटा भाबिनो कोन करिवो then you will lose a lot of time and time is money. Yes. As simple as that. It's a big similarity between business and war. And war. War is a different game altogether. There is a third dimension which gets added. तापरे कौन हला MiG-21 ट्रेनिंग परे कौन हला एनी स्पेसिफिक इंसिडेंट की से ट्रेनिंग रे कि डर लागिला कि प्लेन टा मिसबिहेव करला No, it has happened. I have gone through difficult time city Tejpur re. We are very four good friends within though Air Force बहुत सांग रहते 4 जण आमे सांग थिलु staying in the same हमको गोटे भाषा बळे कहंती. So 4 of us were staying. On fine day we got airborne and one of my roommates he never came back. Oh, mane training with it. So that is something which hits you hard because it's not that it had agre he nathla ame jebe training karthu seti bale jane expire ko jaythila in an aircraft accident
This happened, he was my roommate and he was sleeping in the bed next to me. I mean, Misiki Jaichu, we had the same formation. So he was doing a turn and there I have seen the aircraft just go down like this. Again, very difficult time because when you impact the ground at 1,000 kilometers, nothing remains. He was wearing a watch and he had a slight small tape in it. It was the only thing that could be found from that whole crash site, this much piece. It was difficult, 4 or 5 days. Then you have to gradually start accepting as a part of life. Does it challenges you mentally for the 4 or 5 days? It's a big challenge because first night to mute nido asla nahi. Then I moved out of that room for a few days. I went to the extent of telling my instructor, not because of fear, but because of Sudden incident. sudden incident. ମୋ इंस्ट्रक्टर कहली सर मैं और फ्लाइंग नहीं करूँगा से ता निज स्टोरी कहला मैंने भी ऐसा देखा है डोंट गेट इनटू ऑल दिस वी विल मूव यू आउट सपोर्ट वाज देयर सो इट took me about 8-10 days started flying. Second bad incident is amongst the 4 one more course mate. It happened of course after about 8 years. He also died in a air crash. So we have something known as ejection seat. He pulled the ejection seat, but the ejection seat got stuck in his face. These are the time you feel sad, but by then you have seen many accidents happening. That's a part of our life, I guess. And so 2 of my coursemate, in fact, ame 14 jana aramb korchu. We lost 4 of them in accidents. So that's how life is, I guess. These are the difficult times that you face. But we still call it as part of our life. From there, I shift korlu to Bhuj. Means I got posted to Bhuj. So in this 1 year, 1985, I also met my wife to be in Tejpur. She is from Assam. And now Chimaina, as you know, you have seen. 80 mote gote jan so koibi ମୁଁ ଯେବେ 21 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ମୋତେ I was just sitting with my father. Doing one thing, just polite conversation. ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି କି I am 21 and maybe in 3-4 years I would like to get married, so start looking for a girl. He just turned around and said nothing doing because यहाँ पे nobody will give you a girl because you're a fighter pilot. People think you will die or whatever. So that was the situation. So he said, you just let me know whom you're going to get married. You decide on your own. So I had the full backing of my parents. कि भाई decide करना. And actually those days it was a fact. People did not want to give their daughters. I don't know what is the prevalent situation now to get married to a Fauji. And particularly fighter pilot तो chance ही नहीं था. So having said that, that's where I met my wife in Tezpur. Then I spent 3.5 years in Bhuj. Maybe we would love to hear the story from there to maybe what happened in Kargil. Kargil. In a फौज में कौन हुए कि you keep getting moving from different places को जो पड़े. So say to Bhujru मोरो again supposed to be merit based or what मुझे जानने. I was selected to convert to Miraz 2000. That is 1989. I went from Bhuj. I went to Gwalior. Gwalior is the home base for Miraz 2000. That time it was the best aircraft of Indian Air Force inventory. There again, बहुत बढ़िया पढ़ा इतने तो मोटा बही गोटे नहीं दीटा नहीं 6-7 you had to know it backwards. So for first 4-5 months there was no time to do anything except for पढ़ी सेती वाला आउथरे में भाग लिया क्यों आ गया इधर. Because that time I had already decided मैं बाहर हेवी बोली. Wife, I mean would be wife was in Tejpur. सेते वाले मोबाइल नथला किसी नथला. So I written a letter to my wife कि this new aircraft is not allowing me to get married to you because मेरे को पढ़ाई करना है and continuously पढ़ाई करना है. So that is how again within about 1.5 months, 2 months, start getting used to this new aircraft, start liking that aircraft. A very fantastic aircraft, Miraz 2000, quite capable aircraft. From 89 to 93, I was there. मैंने ग्वालियर में थी. I got posted to Jodhpur again to a Type 75 MiG-21. These changes keep happening. Before reaching Jodhpur, of course, I got married. It was in 1990 December. And 1992, we had a bacha also. It happened in Gwalior both.
Then more posting hella Jodhpur. 3.5 years again flying the MiG-21. C2 more posting hella to Srinagar. While I was in Srinagar, there's a Top Gun तमें जो देखिचो Top Gun. India रो Top Gun होची कौन थी TACD. ସେଥିପାଇଁ I was deputed. I did that course. It's a 5-month long course. से course टा साला पर you become a fighter combat leader. Then तापरे मु गली ये staff college. We have to, it's a part of our progress हुए. City one year रो without flying. It is a पढ़ापढ़ी वाला course. Oh, again. तापरे I got posted back to Mirage 2000, 1998 रे. This is where Kargil came in. So 1999 रे May masare ame we were there in another Air Force station. Ame sunilu ki emergency hela one of our aircraft was shot. Upon the Mirage 2000 was not thought to be utilized. Karana air power usage re korle semane konti it is escalation. Of course, because it was a proxy war more than a war, and I won't call it actually proxy. It was a plan of Musharraf. Parvez Musharraf, who was the army chief that time. That road from Srinagar to Leh, sitare hochi sabu supply jaye. Sita jodi ame summer months re ame somebody stops it. So supply to Siachen gets affected. Into air re kete patheu ame. They were thinking कि जे Siachen रो जदि supply बंद कर दो, हमें Siachen को attack करके they will take over Siachen. Thereafter gradually take over this side. That was his main plan. Siti वाले was the first time आम Mirage 2000 was utilized. Problem थिला कि high point रे जदि take over करी जाए थिले, कोट आचंदी कौन आचंदी detail हमको जाना न थिला. We were operating from a place called Adampur. And this was April, when the thing started bad. May end. May end. When things started growing bad. May first week रे army रो problem है पा आरंभ करला. May second week रे air force रो helicopter और अलगा जहाज use करियो आरंभ करले. May 26-27 सुधा they had already shot down one aircraft. It was a fighter aircraft. Okay. So they had the equipment to shut down. Yeah. The elevation city was close to 15,000, 16,000 feet average. Tankapakre shouldered fire missile thila, which can go another 10,000 feet higher. So 26,000 feet JB fly korthula, they could take on. Nachiketa visare janityo, he was a POW in Kargil. Tara engine problem jogru se eject karla and he fell on the other side. Takku semane capture kar deythile. Takku देखियाकू जने अहुजा गला से देखुला कोड लैंड करछि ताकू फायर करके मारले माने एंड ताकू ही नेवर केम बैक ही इज वीर चक्र posthumous he was captured and when we got his body back there was a gunshot on his head but Nachiketa because ताकू देखे ही देथले कि आमे याको POW नहीं बोली so he was returned after about 10-12 days after the Kargil thing got over. So ये जो अहुजा थिला मो पाखरे मो सांगरे थिला ये NDA रे जूनियर अजय अहुजा मोर स्क्वाड्रन रे ही थिला and plus he was posted Jamnagar रे मो पोस्टिंग थिली भुजरे so you interacted you feel bad again that time and Kargil happened took about 10-15 days हम पाखरे information नथिला For information asla pore we utilize the aircraft in the best possible manner. And this is May end. May end you were stationed there. But you were allowed to fly at that time or was there a restriction to fly? No restriction. You could not fly because of the 15,000 and the No. We were flying, but we were flying above 26,000 feet, keeping ourselves safe, but we don't know where to hit. What happened? The main thing is what happened that June last week in the Kargil? Yeah. हम पाखरे कौन थिला खाली फोटोग्राफ थिला कि एमती आसीछंदी बोली Musharraf had prepared very well. I have to give him full marks for that. But what he had made a big mistake is he केबे भाभी नथला India Air Force use करियो बोली माने third dimension. He had prepared for because he is from army. से तळरू देखिकी कहला कि एमती करले किछ होबनी से ऊपरू भी अटैक हे परियो बोली भाभी नथला आमे ऊपरू आसी कि देखिलु कोड अछि हमो 6-7 दिन लागि गला एक्चुअली टू देखियो कोड हे अछि टारगेट Thor a target Duslapta, then there are no into it. I have myself dropped about 39 bombs. Combination of place called Muntho Dalo, Tiger Hill, .4388, Mushko Nala. I mean, आरंभ कलु जो
मुंथो ढालारे अटैकटा हला फर्स्ट अटैक वेरी सक्सेसफुल सेठी कम से कम 200 लोक मरिछन्ति बिकॉज़ दैट इज वन कैंप जोटे की सब आसिकी रहुथिले राति रे और सकाळे जाईकरी आर्टिलरी गाइड करथुले सेठी को सकाळे सकाळे अराउंड 7 o'clock 8 o'clock इन द मॉर्निंग हमें जाईकरी प्रथम 6टा बम पकेइछु तांको ऊपर and you can see when you attack कला परे उल्टा we go on our back to see तल तो दिसो ना हमें we go on our back उल्टा है कि देखो कोड बम पड़ची it had fallen in the correct place चारटा जहाज गोटे जहाज रे जाउन चारटा जहाज नहीं करी मैंने 6 into 4 24 bombs were dropped in the Muntadhalo. in Muntadhalo. That was the beginning of the end of Kargil as far as Parvez Musharraf. मैंने किसी equipment difference थिला कि in the May or June which helped you in that. Equipment difference नहीं हमको स्थिति की टाइम लगी गला to identify where the target is. आगे कौन आर्मी कौन करथला एटू आर्टिलरी फायर करथले से माने भी सेटू आर्टिलरी फायर करथले डिफरेंस या थला हमको हम ग्राउंड वाला को जाना पड़नथला कोठे फायर जाइकी कोठे पड़ुची But they could see the तांके पोस्ट पे रखले सेवन देखुथले सो देयर फायरिंग वाज एक्यूरेट आवर फायरिंग वाज नॉट एक्यूरेट and most of our amajite army jawan 527 life more than half they have died because of shelling not arm to arm combat or fighting. The biggest problem is Tiger Hill. If you see geographically एमती जगह अच्छी बहुत strategic जगह तार दीटा एज अच्छे गोटे as you see it गोटे ईस्टर्न एज गोटे वेस्टर्न एज सीटी पांचटा लोक थिले मध्य because terrain एते steep अच्छी they can take on 250 people going up. खाली पत्थर गोटे पकेले you couldn't because that is so steep. आउ सेठू द्रास कारगिल रोड ने सेटा एकदम very clearly visible थिला. So गाड़ी जाउथला से माने फायर करथले से गाड़ी को हिट करथले. So that was the biggest problem how to take on Kargil. So there is a laser guided bomb जोटा कि Mirage 2000 that's a capability enhancement जहाज रे. So laser guided bomb use करके first time on I think 24th or 25th of June Tiger Hill ro eastern edge re they have done a laser guided bomb attack. So seita hela pare jo tole jo army jogi thile they started moving up to take over. ଦୁଇ ଦିନ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦୁଇଟା ଏଜ୍ ଅଛି ସେ ଏଠିକା ଲୋକ ଏଠିକୁ ଆସିଲେ so we had to take on the western edge also. ସେତିବେଳେ ରାତିରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ନାମ୍ବିୟାର ଥିଲେ ସେତିବେଳେ we have done the first ever night attack. We hit the western edge. Now, এই দুইটা গলা পরে I won't say it was a cakewalk for army. बहुत भलो चला. much easier. Much then the resistance नथिला ना. So they could take over. So Muntadhalo was June 28. No, Muntadhalo was June 16th. Tiger Hill was on 24th of June and 28th रे night attack हला. Within about 2 days, army had taken over Tiger. So that was the first ever night attack. First ever night attack using a laser guided bomb. So basically, both Tiger Hill hit and Muntadhalo. They are the most successful attacks of my life. So, you know, one interesting thing, it's not a rumor, it's a fact, because I saw the documentary where it speaks about a Jugaad at the Kargil War, where the missiles were from Israel, but the circuitry was from US, and then the aircraft was Russian, the pilot was Indian, and we destroyed Pakistan with that. So, how did that Jugaad happen? नहीं कारगिल रे कौन होता कि when the Mirage 2000 आसीथिला सेतिबळे along with it weapon आसला something known as Patnaik laser designation pod ता संगरे मात्रा माने फ्रेंच बॉम्ब गोटे थला 1000 kg बॉम्ब थला सेटा आसला 15 वर्ष 1985 रे जहाज आसी ताको 8-10 माने 1990 आखा पाखा रे से आसला सब बॉम्ब गुड़ा बट इट वाज अ डे टाइम बॉम्ब एंड प्लस द पैट्रिक लेजर डेजिग्नेशन पॉड था इट वाज ओनली अ डे टाइम पॉड आजिकली तो वॉरफेयर चेंज हो जाइए आउ दिन नहीं इट शुड बी डे नाइट सो से आम कौन करूँ गोटे लिटनिंग पॉड इजराइली सेटा आम आडाप्ट करूँ मिराज 2000 टू स्टार्ट विथ पर Su-30 लगिला जैगुआर लगिला किंतु अदरवाइज स्टार्टिंग है मिराज 2000 ता संगे मैच करिया कौन हमें व्हाट हाउ डज द लेजर डेजिग्नेशन से होची लेजर फायर करिवो लेजर रिसीव करिवो बॉम्ब आउ गाइड करिवो बाय डायरेक्शन तार फिन अच्छी टू द टार्गेट से जो लेजर गाइडेड बॉम्ब थाए से गोटे किट था हेड रे जोटा को लेजर को रिसीव करिवो सो द किट
is a paveway kit which is US. Oh. और जो बॉम्ब अच्छे that was Indian, Russian bomb. ता सामना रे इटा लागुथला. Aircraft was not Indian, French, and pilot was Indian. So this was a combination. It takes time for clearance. Karana, at the end of it, safety of aircraft also is important when you do this Jugaad. But for the Kargil issue, particularly a special clearance was given. Ki there is risk to the life of the pilot and the aircraft, but we give you the clearance. So that is the Jugaad had happened. Ki paveway kit American, laser designation pod Israeli, bomb Indian, aircraft French, pilot Indian. So this combination ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ବିଫୋର୍ ଫାୟାରିଂ ଯାଇକରି ଆମ ରେଞ୍ଜରେ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲୁ. ସେମ୍ ଇଜ୍ ଦ କେସ୍ ୱିଥ୍ 1000 kg जो आमे ड्रॉप करलु फाइनली. इट्स नॉट दैट आमे सडनली जाकरी ड्रॉप करलु. देयर वाज अ प्रॉब्लम हियर. मु जंतु कहली 15,000 फीट रे टारगेट अच्छे. नो एयर फोर्स इन द वर्ल्ड हैड एवर अटैक्ड ए टारगेट एट 15,000 फीट. तार रिपरकशन कौन 15,000 फीट जदि अच्छी से पाखे थिला 10,000 square feet, 10,000 feet air to दैट मीन्स 25,000. तुम जो 25,000 पॉइंट आसिया को चाहूच बहुत हाई स्पीड तुम जो गाड़ी टर्न करा चाहूच तुम रेडियस टर्न बढ़ी जाए. सिमिलरली हम 400 किलोमीटर 400 नॉट रे आसचो तो मस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट तुम 32,000 रु आरंभ करले जाके 25,000 रे. दैट मीन्स यू हैव टू रिलीज द बॉम्ब एट 32,000 फीट. सो 32,000 फीट रे रिलीज करिया को तुमको स्टार्ट करिया को 40,000 फीट रे. 40,000 रे डिफरेंस केते अछि 25,000 फीट. तो लाइन ऑफ साइट रे सेटा आसीबो नहीं. सो दिस आर द प्रॉब्लम्स वी हैड टू फेस. कि आम स्टार्ट करूँ 42,000 फीट और जदि डाइव रे रखिबू थ्रॉटल पूरा करके एयर ब्रेक्स आउट करले तुम क्रॉस कर दियो स्पीड लिमिट ऑफ द एयरक्राफ्ट. सो दैट वाज द डिलेमा. ताकू प्रैक्टिस करके ओवरकम करके हिट करके आसचो. दैट इज द जुगाड़ व्हिच वी हैड डन. एंड कारण नो एयरफोर्स एते अल्टीट्यूड केबे यूज करेनी. नो एयरफोर्स एंड नॉट लाइकली टू यूज. एबे मे बी चाइना विल यूज इफ दे वांट टू हिट एनी टारगेट्स ऑन टॉप. अदरवाइज 15,000 फीट रे वेरी हाई ऑल्टीट्यूड वॉर. वेरी ऑल्टी कारण एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस भी एफेक्ट करे. योर इंजन परफॉर्मेंस एफेक्ट करे. सब एफेक्ट करे. So it's a combination of many things. There was one more rumor around 2013-14 during the change of the regime that there were inventory issues with the army and all. So, not only army. Yes. Like ମୁଁ ଆगे ବି କହିଛି कि 2004 ରୁ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ यूपीए सरकार थिला. I do not hesitate when I say this with all my conviction. Of course 2012-13 रे आर्मी चीफ वीके सिंह जो थे से गोटे चिट्ठी लिखी थे कि आम पाखे वेपन नहीं. सो आई विल कम बैक टू 2004 to 2014. वी हैड ए डिफेंस मिनिस्टर ताका ना थिला एके एंटनी. ही वाज द बेस्ट डिफेंस मिनिस्टर नॉट फॉर इंडिया बट फॉर पाकिस्तान एंड चाइना. कारण इन द 10 years किसी भी किणिले नहीं से. सो जहाँ भी थिला आम पाखे बिफोर 2004 सबुतर गोटे सेल्फ लाइफ था. और मॉडर्नाइजेशन तुम जो करनी वी आर सफरिंग द कन्सिक्वेंसेस एबे भी. से जो 2004 ରୁ 2014 पर्यंत पैसा दिहलानी डिफेंस फोर्सेस को से चाइना जो आगे चलीगला तांकर जो टेक्निकल एडवांटेजटा अच्छी एबे वी कैन नेवर कैच अप नाउ. आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक अबाउट इट. हमर रियल एनिमी इज नॉट पाकिस्तान, इट इज चाइना. कारण सी बसी केबे अरुणाचल नेब, सी बसी केबे ले लद्दाख नेब. बिकज तिब्बत रे एवरीथिंग इज स्नो. एठी होची सब जंगल अच्छी ये अच्छी दे आर वेरी स्विंगिंग. सो चाइना को कंपेयर करियो हेले दिस 10 years जो आमे लॉस करिचो इट इज नॉट दैट एंथनी डिड नॉट वांट इट. इट इज सोनिया गांधी एंड द कांग्रेस पार्टी. So that is also the time जेबे तंकरो MOU हेतला चाइना संगरे. So if you connect all the dots, you can start doubting कि what they did was it right. एबे तुमको जाना पड़े. After 2014, when the present government came, it is not like तुम्हें दुकान को जाकरी
नहीं आसो ऑफ कोर्स तुम्हें आज जदि ऑर्डर करिवो 5 वर्ष पर मिलला जंते रफाल लास्ट एयरक्राफ्ट 36th एयरक्राफ्ट जो आसिला 5 years आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट वाज साइन S400 3 वर्ष लागिला आ बाकी जो बंद ही जेतला प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स तार लाइफ एक्सपायर ही जेतला सेगुड़ा भी 4-5 वर्ष लागिला सो इट जेबे पुलवामा हेलार रेस्पॉन्स बालाकोट हेला हम पाखे रफाल नथला हम पाखे S400 नथला हम पाखे एसोसिएटेड वेपन्स नथला सो आवर रेस्पॉन्स वाज नॉट एज गुड कारण ऑफ दिस 10 years जो आम लूज करलु 2004 ରୁ 2014 तार रेस्पॉन्स रे आमर सिचुएशन ठीक नथला बट आफ्टर दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज कम से माने आरंभ करछन्दी बट इज इट सफिशिएंट द आंसर इज अ बिग नो दे हैव आल्सो गॉट टू स्पेंड मच मोर एबे जेते खर्च करछन डोंट बी हैप्पी बिकॉज वी आर नोवेयर एज फार एज चाइना इज कंसर्न जदि चाइना डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट करिवो वी विल नॉट बी इन अ हैप्पी स्टेट कैपेबिलिटी अच्छी वी विल बी एबल टू स्टॉप देम टू अ ग्रेट एक्सटेंट बट नॉट व्हाट एवरी इंडियन विड वांट this was all about your professional life and apno face karle and all. Maybe I would ask 2 questions more and it is more personal. One would be, the Kargil was maybe the first war you faced. How was your feeling? What was your family going through? Because what happens is we see a lot of movies, we see a lot of media and videos where they celebrate war heroes, where they give war cries and they always celebrate, but nobody talks about the mental aspect. It's like this जेबे कारगिल हैला मु विराज 2000 फ्लाई करथिली ग्वालियर रे थिली एज ए दिस थिंग आमे सब ग्वालियर रु जाइतलु आदमपुर रु ऑपरेट करथलु आ अंबाला रु ऑपरेट व्हिच इज वे अवे फ्रॉम कारगिल बिकॉज तार मु जो कहती कि द कैपेबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट इज सच 45 minutes लगुला जीवाको 45 minutes लगुला आसिया को अटैक 10 minutes लगुला मीन्स 1 hour 40 minutes रे जाइके आसिके अटैक करके पळास बिकॉज फिजिकली आमे आदमपुर रे थिलु से मो फैमिली जानी थला दैट टाइम ता मन रे ये पसिलानी कि ए एते दूर जाइके बम करके आछथि एंड फॉर गुड रीजन आमे कहि नथले बिकॉज मोमेंट योर फैमिली नोज ताको डर लागिवो आ सेति बेले से मोबाइल भी नथला डे टू डे ऑलवेज सदा बेले संध्या बेले आमे आसी फोन करथु लैंडलाइन रे एयरफोर्स लाइन रे इट्स ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ वी कैन नॉट से एटलीस्ट एयरफोर्स आर्मी वाला कौन अच्छे कि से जानी छंदी बॉर्डर रे अछंदी एंड तापरे सेति बेले तांक पाखरे माने मोबाइल नथला हम पाखरे माने नथला से जानि थिले जाई छंदी बट डेथ्स वाज हैपनिंग 527 डेथ्स इज नॉट अ जोक हेले तांको इनफॉरमेशन आसला हमरा मध्य एयरफोर्स रो गोटे हेलिकॉप्टर जाइए आम ओडिया साहू बोलिकी तार मध्य डेथ होती तापरे नाचिके POW नहीं गुड़ा सब शुणुले बिकॉज इट वाज बीइंग अनाउंस्ड सो इट मेक्स अ डिफरेंस तुम फैमिली को जब जनईदेव तुम निजर पीस ऑफ माइंड तुम जब न कहीकि कर किसी होगले से जानवे दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ दैट इज समथिंग आम पिला बेलू आम यूज टू अच्छु एंड प्रोबेबली अवर फैमिलीज आर आल्सो यूज्ड कि एवरी डे जो जाऊँ इवन पीस टाइम रे एक्सीडेंट हुए एवरी डे से जानी कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ही विल नॉट कम बैक एवरी डे इट्स नॉट ओनली वॉर ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस हाँ नहीं फ्लाई कर ले एंड वी कीप हैविंग दिस एक्सीडेंट्स वी कीप लूजिंग पायलट्स so they are conditioned to an extent, the families are conditioned to an extent and they are hoping against hope कि कुछ ना हो and I've been lucky, my wife has been lucky ମୁଁ finish करছি मोर tenure about 80 to 90% are lucky 10% are not lucky so that is something part of our life for at least Air Force pilots fighter pilots in particular because every सबू sortie रे right from takeoff to landing if you don't give you 100%, one mistake here or there because remember तुम एकला अच्छा, there is no one to help you and there is only one engine. Something goes to the wrong to the engine, you may have to eject. If you eject, तुम तले गोटे rocket अच्छे, your back goes for a 6. Then when you are flying, when you are pulling 9G, all the blood goes down from the head नीचे.
So you black out. So many things which happen. Fighter flying is इतने आसान भी नहीं, but over a period of time you get used to it. So coming back to your question, family makes a difference. At least during that time, because of non-communication, it was good not to tell them. बाद में when they came, थोड़ा anger दिखाया कि हमको बताया क्यों नहीं. So they also understand. And what was the feeling when you got the Vayu Sena Award, Gallantry Medal? You feel good, not because the Gallantry Award, we don't work for Gallantry Award. I am glad that I was of some use to the country and Air Force, because people have joined service and retired without seeing action. I was fortunate that within about 15 years or 16 years of service, I saw action, I took part, I was able to avenge the deaths of so many of my army brothers who lost their lives because of that stupid man, Musharraf. Tapare then promotion asila. I became a wing commander. Mu seiti flight commander thili Miras 2000 It's a part of our growing up process. Wing commander hela pare so into air raid quarters. Air raid quarters is a desk job. But in desk job also there are two kinds. One is operations job, one is day to day. So I was fortunate enough to be in part of that operation. If you remember, after that, the parliament was attacked. That time I was in air raid quarters. And because I was involved in Kargil, so the chief took it on himself to include me as part of the core team. There, working hours from morning, afternoon, night, and Parakram Aramala City. So I was part of the core team of the Chief of Air Staff. So, Kona plan courses. So it gave me more experience. A very satisfying tenure of 3 years that I spent there. From there, I went to command a RPS squadron. RP means drone, bigger drone, Heron searcher. With me, I went to Jaisalmer, commanding officer of a unit, RP unit. So again, 2.5 years city spent currently. So I had exposure of till now MiG-21, Kargil, Parakram, and RPM. As things is progressing, this is something which is very good. Tapre went for a course. It's called Higher Air Command Course. So SETA course karla pare. Then I was posted to Delhi, Western Air Command. Again, a very prestigious place called Cat's Paw. Cat's Paw is the nerve center of each command. Mane seti sabu planning ta seti hue. How the command is going to fight the war. Cat's Paw stand for Command Air Tasking, Strike Planning and Aerial Warfare. And it is the place where sabu information ase. It's a very... So you prepare for the future, you prepare for say mock and exercises and analysis. That is the nerve center. It's a privileged posting. Everyone doesn't get to be cat's paw. Setu I was posted. Then dira bada exercise hela. Gagan Shakti 1 ta jota hai that happened during the time between two commands in line. That was a very interesting phase. Then for Setu mate posting hela as station commander of Barnala. So Barnala re there is something known as aerostat unit. Aerostat unit mane jo radar ta achi, it is inside a balloon. Gas, helium gas balloon. 15,000 upur feet ko sita patha hua hai. से ऊपर जो देखिबो तळु मते देख परियो तार विजिबिलिटी बढ़ी जाउछ टिल अबाउट 200-250 किलोमीटर्स मते देख परियो. I'm just curious, when you have a helium balloon with the radar in the air, कितने ऊपर था, कितने square? 15,000 feet. तो does private aviation people knows about it? Yeah. से जानते हुए. अच्छा. Because it is connected with the cable. Oh, अच्छा. After that, next important assignment was Commandant of Electronic Warfare. So what is electronic warfare? Electronic warfare is a new warfare tool. Suppose there is a radar and there is communication. Everything has got a pulse width, a frequency. So if you are able to know what frequency the enemy is operating, you can jam that
frequency, Okay. for which all this information is required. Similarly, info security, cyber security, it's all part of this game. So I was electronic warfare range, Air Force ଗୋଟେ ଅଛି. So there they teach people how to cater for the electromagnetic spectrum. In fact, Sindoor Yes. is I a was big about eye, to come on that, yes. Yeah. eye opener because warfare is gradually change होची. City ମୋର 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ then I got promoted again. I became a air commodore. Back to air headquarters. ସେଥିରେ I was looking after electronic warfare as well as information warfare. Cyber security ସେଥିରେ ଆସୁଛି. There again more exposure. So see the combination in which I have grown up in Air Force. Find myself fortunate. Après they posted me as the overall head of all fighter operations in Eastern Air Command, Shillong, as an air commodore. Air 1 taku kuhanti, he is again the head of all fighter flying. Mo tole thile ops related staff, they help you out. So I spent again 1.5 years at Shillong as Air 1 of a operational command. Tapare they chose that I should go and become the air officer commanding of Ambala, the oldest air base of Air Force. Ambala re ସେତିବେଳେ ଥିଲା 3ଟା fighter squad, 2ଟା Jaguar ଆଉ ଗୋଟେ MiG-21 squad ଥିଲା, ଗୋଟେ Pichora unit ଥିଲା. So when you say squad, how big is the squad? Squadron is comprising of about 18 to 20 aircraft, about 300 personnel, 25 to 30 pilots, and very satisfying tenure because you are actually looking after the management of a whole Air Force station comprising of about 4,500 personnel. Tanko family vise dele, it comes to about 15,000 people. This is how we grew up in service. तमे आगे पायलट अफसर अच्छा, कुंड केयरलेस एटीट्यूड, ओनली फ्लाइंग करो, then you become a senior pilot, then you start teaching the youngsters, then you become flight commander when everything revolves around all planning with you, then you become a CO, then after CO you become a AOC. I mean, it's a process, and in between तमे मझे course में जाओ, so it's a continuous process, like it happens in a business. When you start your business, you start small, then grow up, then you become in a managerial situation. Yes. ଯଦି ପିଲାବେଳେ ମାନେ ଇନିସିଆଲ ଟାଇମ୍ ତମେ ବିଜନେସ୍ରେ ତମେ ଖଟିକିରି ଗେମ୍ ବୁଝିବ ନାହିଁ, ହେଲେ ତମେ ଉପରେ କରିପାରିବ. ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଏଇଟା ହୁଏ. ତମେ ନିଜ କଥା ଭାବ କି when you started, you didn't start as boss straight away. No. Started with 3 flight project in 2008. So that's how all business is like that. And during those 3 young days, if you sweat it out, it helps you ପରେ. ସେତିକିବେଳେ ଯଦି ଆରାମରେ ନ ହବ ପରେ ତମେ ଜାଣିବନି କ'ଣ କର. That is a big difference. That same thing is applicable in the forge also. So ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିକିରି ସେ ସେମିତି ହୁଏ ଆଉ. So based on this, like I read something called Harvard Business Review, सेठी leadership गुड़ाए examples था, and they say the most important part which people don't understand, माने people जानते नहीं कि understand भी करते नहीं कि उन्हें leader को कौन दरकार. The most important part is emotional intelligence. कि मो सांगरे जे अच्छंती, मो तोड़े जे अच्छंती, मो सांगरे अच्छंती, मो ऊपर अच्छंती, तांकर emotionally कौन level रे से अच्छंती. तांकर psyche डा कौन से किम्ती comfort हेवे, से किम्ती motivate हेवे, से किम्ती कामों करीवे. So emotional intelligence is the most important part. कामों तो समझते करचंती, कामों तो समझते जानते. इमोशनल इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड करिବାକୁ somewhere ଆମେ आर्म्ड फोर्स रे कहन तो हैप्पीनेस क्वोशेंट. हैप्पीनेस क्वोशेंट इज अंडरस्टैंडिंग द लास्ट पर्सन जे काम करूची से ता कामटा with motivation करूची ना नहीं. Satisfaction अच्छी. I'll give you example. तम कंस्ट्रक्शन बिजनेस रे सपोज someone is welding, दीटा रॉड को वेल्ड करूची, से जब कंफर्टेबली से कामटा करिवनी, तार जदि डाइवर्शन हो जाइछि, तार निजर पर्सनल किछि प्रॉब्लम अछि, यू एज ए लीडर हैव टू एंश्योर तम तळे जो काम करूछंदी से ईच एंड एवरी लेबर रो लाइफ को बुझिया पड़िबो. सेटा जदि से बुझिला और तुमको फीडबैक टा देला कि आज्ञा ए लोकटा 3 दिन हेलाणी काम करछि,
ताकू टिके रेस्ट दरकार जर अच्छी कि जर अच्छी कौन अच्छी ता फैमिली कौन प्रॉब्लम अच्छी से यदि आसी कहब ठीक अच्छे गोटे 3 दिन छुट्टी जा 2 दिन ताकू यदि छुट्टी दे दो तृतीय दिन जब आसो पूरा एकदम मोटिवेटेड होके आसो मैनेजर एमती भी अच्छे ना ना किसी छुट्टी ना तुम काम कर हाँ से दुखी काम करियो गाड़ी दउथबो सो दैट इज व्हाट हैपेंस इन डे टू डे तमरो बिजनेस रे सेम थिंग हैपेंस इन आर्म फोर्सेस आल्सो जब वो बरनाला रे थिली आई यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग अराउंड मार्च एप्रिल मास रे जब जाउथली मु देखली गोटे फार्मर थिला फार्मर होची तार 8टा महिषी थिला से चारिआडे मस्किटो नेट लगेला ताकू पचारली ये भैंसा के लिए तुमने मस्किटो नेट लगाया अच्छी बात है हाउ डज इट हेल्प से गोटे मत कहला विच इज एप्लिकेबल फॉर यू फॉर एवरीवन इन द वर्ल्ड से मत कहला आज्ञा कि जो मस्किटो नेट लगी मु पचारली केते टका लागला कहला मत 20,000 टकार मस्किटो नेट लगी चारि हाउ डज इट हेल्प से कहला महिषी को जदि मशा कामड़े राति जाक से गोड़ एमती एमती करके निजक सेव करियो आ ताकू जब मस्किटो नेट लगेदेला मशा कम हेबे तो ताकू मशा कामड़े तो से खुशी रे रहिबो महिष जदि खुशी रे रहिबो प्रति महिषी दिन को 2 लीटर एक्स्ट्रा क्षीर दियो और 8टा महिषी अच्छी 16 लीटर एक्स्ट्रा मिलची 16 लीटर इंटू 30 इज 500 लीटर 500 इंटू 40 माने मासक मोर पैसा उठी जाऊँगी लुक एट हिज साइकी सी कहे मो महिषी को मत खुशी रखिले मत अधिक क्षीर मिलूँ सेम थिंग आप एप्लाय करूँ एक्रॉस द बोर्ड तुम जो लेबर खुशी रो तार आउटपुट बढ़ स्टाफ खुशी तुम जो स्टाफ खुशी से मैंने निज तरफ आज जब कम कि पड़ा 7टा बेले नहीं 8टा बेले से निज तरफ रू कर सो दैट इज समथिंग आई लर्न फ्रॉम दैट फार्मर and that I have applied across the board in my entire service career after that. Happiness quotient of personal तम तले जे काम करछंती यदि समय तांकु खुशी रखियो से मन निज तरफ रो कहबे सर आपण परंतु आमे देखि देबो that is something True. is what one needs to learn to keep the happiness quotient of the people working under you. So coming back to Ambala, had a great tenure. आमर मझे मझे इंस्पेक्शन भी हुए एंड आई एम ग्लैड कि इंस्पेक्शन रो आउटकम थिला आई वाज chosen as the best operational station in the entire command. So you get a big huge trophy. So best operational station ro ye medla and people were genuinely happy and it makes a difference. Here I must tell you that it's not cheap popularity that I was going for. I was firm where it is required and I was considerate where it is required. How does it make a difference? In an organization कौन हुए? It's a combination of hardworking people, people who don't want to work. As a leader, तमें जदि identify करी परिलो कि ये लोकटा ठीक रे काम करने, ताकू कौन चाबी देले से काम करिवो, तमें जदि ए ग्रुप ऑफ पीपल से 20 को 3 जन को जदि जो माने सदा बेले लुचिकी काम करती तांको जदि काम करे परिबो जे काम करि तार मोरल औरी बढ़ी जो जस्ट रिमेंबर दिस फ्रॉम देयर मु आसिली दिल्ली टू स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड लुक्स आफ्टर न्यूक्लियर एसेट्स ऑफ द एयर फोर्स तापरे आई केम टू एयर हेडक्वार्टर्स ने आई लुकिंग आउट एयर डिफेंस ऑफ द एंटायर कंट्री सो सेथिरे कोन होय कि इवन इफ ए small aircraft is airborne any part of the country, you have to keep track of that. So you should know by the end of the day. No. Online. Oh, okay. Live. So ସେଥିପାଇଁ ଏବେ जो सिंदूर तमे सुनुचो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम IACCS ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେବେ ଅମ୍ବାଲାରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଦ 5-6 ନୋଟ୍ସ ମାନେ ତମେ ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସିକି ଯଦି ଇଫ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ କନେକ୍ଟିଭିଟି କେଉଁ କଡ଼ରେ କେଉଁ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କୋର୍ଟ ଯାଉଛି ତାର ଭିଜିବିଲିଟି ରହିବ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମୋସ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଅନ୍ ଟୁ ଦ Su-30 ହେଲା ଆଉ S-400 କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାର 2019 19 to 20 ସେତେବେଳେ ଆଇ ୱାଜ୍
overseeing all this. जो हैला तो S400 कोठू जीवो कोठू रिप्लाई करिवो तापरे केतटा Su-30 रे ब्रह्मोस लागिवो इट्स ए ओवरऑल देन IACCS कोटे लागिले visibility हो. In between all this, then Balakot happened. So Balakot tebe hela again, since air defense was over generally required, so the entire operation Balakot re, I was part of, I won't say the planning. Planning is done by the command. Execution wale कोटा केमती होजी, I was very much present. हम देखते ता पारे मध्य कौन action हला. I was part of the entire team. So how exactly was it executed by Balakot re? बालाकोट प्लानिंग होची करथिला वेस्टर्न ए कमांड कारण पुलवामा हे जाइथिला वो हम प्राइम मिनिस्टर कहि सारथिले कि वी हैव टू टेक एक्शन तांको ऑप्शंस दिया गला हमें एमती करि परियो सो से कहले ओके यू गो अहेड एंड डू तो राती 3टा बेले पीपल गॉट एबोर्ड दे स्टेड वेल टू द वेस्ट तळे आउटे जहाज को पठाला टू कीप देम बिजी से माने एयरबोर्न है कि एपटे आसिले माने एपडू जाकी पकी क्लास इट वाज ए fairly simple, well executed task. Next day, तांको response रे जब आसिले, सिटी वाले अभिनंदन cross करके he crossed across and he had to eject. So the story is known. So सिटी वाले अभिनंदन became a bigger reason because he was taken as prisoner of war. The actual task done by the aircraft in hitting Balakot became a secondary issue, but we did our job. I have no doubts about it. एबे लोको जानी चंदी कि hitting, lot of people were hit. After that, Balakot pare, I went to Hyderabad. I was the commandant of College of Air Warfare. City hochi youngsters mane asandi, tanku sikha hoya how to go about this thing. I was the commandant head of that place. Tapare mu asili Central Air Command. I was the senior air staff officer. Senior air staff officer looks after the entire operations of the command. Allahabad re achi seta. So Central Air Command है जितने assets अच्छी AVAX हो, refueler हो, Mirage 2000 हो, Jaguars हो, मैंने fighter, transport, helicopter, सब everything is looked after by the operations of the SASO. So I was the SASO there. Then I was promoted and made the Air Officer Commanding in Chief of Eastern Air Command. ACOs. AOCNC. AOCNC. So that is a very, very prestigious place because Doklam he jaithila, Galwan he nothla ta aguru, and it is something which is looking after China. The border is with besides China, achi Myanmar achi, Bangladesh achi, Bhutan achi, Nepal achi, within the area of responsibility. Bhubaneswar madhyo Eastern Air Command. So besides operational thing, if you remember, I had made sure that Odisha re dita jaga re Surya Kiran aerobatic team ro display habo. So I was present when Katak pakhare gote heitla gote Puri pakhare heitla. Dita jagare tankara Surya Kiran aerobatic team askri display kariki gale. That is a non-operational thing. So as AOCNC responsibility is even bigger. Mane as a AOC Ambala kon thila gote station dekhuthulu. As AOCNC you look after 13 stations. माने तुम जो कहली 10टा it is multiply into 10 means 100 your job increases. You have to visit all the stations, make sure that every AOC is doing his job, people under him are doing their job, tankar kon requirement achi, procurement achi. Then simultaneously you have to interact with the local state governments. I had to interact with Chief Minister of Assam, Chief Minister of Odisha, Chief Ministers of Arunachal, Governors of West Bengal, and within area jete achen. And we, our issue होता है कि कोई land दरकार हुए. So here मु कहूची about Honorable Chief Minister of Assam. मु तांको खाली गोटे request करली कि the chicken snake अच्छी, एटू जिनस ऐसे परिबनी. तमें जदि हमको land न दबो, 2 दिन पर हमें inoperative हेजो. So से बहुत immediately बुझिले. करे जोटे दरकार अच्छी तम खाली को. So we used to deal with तंग So he gave us the clearance कि फौज को जितना लैंड है दे दो. So सेगुड़ा सबू कथा हेबाकू से जदि चीफ मिनिस्टर बुझी गला माने which is a great thing which he understood. So we are much better off after the new government has come. It is Modi Sahab's government.
he has given the go ahead. So we have progressed. So capability enhancement as so I left with a high in the sense that capability of Eastern Air Command increased. Am pakre S-400 thila, am pakre Rafale squadron thila. I had the privilege of flying the Rafale, I had the privilege of flying the Su-30. And more last sortie I have taken a full route of entire Eastern Air Command in a fighter aircraft. Staying 20 kilometers from the international border line of actual control. I have flown in a Rafale, I have flown in a Su-30 just to have a look. Puru bahut badhiya dhuse. But warfare is different. When you are doing attacks, it is different. I'm a height at Haikri. It's an interesting thing. So that's how I finished my career. Thank you. It's a great story. Mane, Story nahi hai, fact hai. Fact, sorry. I think not many people Odisha re jani thibe life you've lived, the honor you've lived through. So बहुत भल लगिला सुनी की. Before that we take a break. एडी हमें break बहुत interestingly नोचू कि we get a local cuisine with us. And we take a nice food break. तो आज ही हमें मसला मुड़ी आनी चु. So that is one thing. So you love eating food. कौन खाती भुवनेश्वर राशि की सब बड़े. Today a menu you must know. In fact, my wife is not around. She will come as you again. So I have a boy who's ମୁଁ ଖାଇଲି ମଞ୍ଜା ବୁଝିଛ? ମଞ୍ଜା ଶାଗ ବାଇଗଣ ଭଜା ଆଉ ଇଏ I am from Parla-Khimindi area. Charu. Acha. This is a combination I had. So in fact I was telling se toka kohthili ki aji mu pura Odia khana khaichi bahut din pore. So I love for the lunch. For the lunch. Otherwise fish is an option. I love fish. In fact I love non-veg more than veg. But veg re sago thile, manja thile, I am happy. There's a kind of food I like. But ମୁଁ ପୁରା ଦେଶ ସାରା ବୁଲିଛି. So every place has its own beauty. Yes. Assamରେ there is something known as tenga. ମାଛ ଟେଙ୍ଗା. That is something a speciality of that place. ଏବେ ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ମୋ ପୁଅ ରହୁଛି. I am so staying there. Hyderabad specialty is biryani. There are different kinds of biryani. You go to north, Punjab re jibo, you get tandoori roti, tandoori chicken, butter chicken. And east re jibo, west re jibo, you go to Gujarat, you get pav bhaji, fantastic pav bhaji they make. A lot of Gujarati dishes. 3.5 ବର୍ଷ ରହିଛି ସେଇଠି. Farsan, dhokla. So ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଇ. Once you join Fauj and go around, there is nothing like eating out. You no more a Odia actually. Yeah. You eat everything. And ମୁଁ course କରିଛି ଗୋଟେ. We have to do a jungle and snow survival course. Oh wow. ସେଇଟା କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗୋଟେ thick of jungle ଭିତରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ 3 ଦିନ ପାଇଁ. They will give you nothing. ମାଚିସ୍ ଗୋଟେ ଦେବେ, ଛୋଟ ମାଚିସ୍ ଗୋଟେ ଦେବେ. ସେଇଟା ଦେବେ, you stay for 3 days in the jungle on your own. ସେଇଟା assume କରାଯାଏ କି while flying ତମେ ଯଦି eject କରିବ ଜଙ୍ଗଲରେ, you should learn what to eat, how to live, how to do. So ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ଯାଇଥିଲୁ. କଡ଼ି ପତ୍ତା ମାନେ ମିର୍ସିଙ୍ଗା ପତ୍ର. ମିର୍ସିଙ୍ଗା ପତ୍ରକୁ ଲୁଣ ପକେଇକି ଗରମ କରିକି ପିଇକି ଜିଇଛୁ. And which area was that? ଦେହରାଦୁନ ଜଙ୍ଗଲ. ଠିକ୍ ଅଫ୍ ଜଙ୍ଗଲ. ଆଚ୍ଛା ଗଡ଼ୱାଲ. ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି 3 ଦିନ ପାଇଁ. ସେଇଠି ସବୁ ଲିଭ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ. ମାନେ ସେଇଠି କ'ଣ ପତ୍ର ଖାଇଲେ ହେବ, କ'ଣ ଖାଇକିରି ଗରମ କରିକି ରହିବ. ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼େ ହ୍ୟାମକ୍ କରିକିରି. ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଜଙ୍ଗଲ ସର୍ଭାଇଭାଲ. ଆଉ ଗୋଟେ କୋର୍ସ କରନ୍ତି ସି ସର୍ଭାଇଭାଲ. ସି ସର୍ଭାଇଭାଲ କ'ଣ କରିବେ? ତମେ ସମୁଦ୍ରକୁ ନେଇଯିବେ ମିଡଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ସି 30-40 କିଲୋମିଟର ଇନସାଇଡ୍. ତମକୁ ଉପରୁ ପକାଇଦେବେ. That is, suppose you are flying over the sea and you eject. ତମେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିବ. How to survive those? ସେଇଟା ଗୋଟେ. So your biggest fear is ସେ ଯେଉଁ ହେଲିକପ୍ଟର ଆସିକି ପକାଇ ଦେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ସେ ଆସିବ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆସିବ.
actual 20 minutes, but there is possibility of making it 2 hours कारण जदि हेलीकॉप्टर जो आसी सेटा जदि खराब हो गला गोटे हेलीकॉप्टर आसु घंटे लगी से तुम लाइफ जैकेट लगे समुद्र अच्छ जगी चकी किए आसिक नब देन से शिखा हुए एमती ठिया से विंच करती ऊपर को सो दैट ट्रेनिंग सो ये सब ट्रेनिंग हुए इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ बट दैट 1 hour that you spend in the sea you are always hoping कि कोई शार्क आके तुमको ना खा ले that's something so for shark बोधियो से माने गोटे ये दियंती गोटे कलर फ्लूइड एंटी शार्क रिपेलेंट अच्छी तम पाखे थाए you have to know how to use it that's a part of our survival pack जदि शार्क आसियो तम so before shark आसु न आसु तम आमे ऑलरेडी पके दो अच्छा we don't wait for a shark to come we put it around you that shark repellent पके यू आर वेटिंग से आसियो 15-20 मिनट पर एमती कर बिंच करके नब सो अगेन यू ह्यूज साई ऑफ रिलीफ के चलो आज भी बच गया सो दैट इज हाउ इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग एवरीवन गोज थ्रू इट खाना पीना एवरीथिंग इज गुड एंड आई डोंट थिंक एनीवेयर एल्स यू गेट बेटर गुपचुप एंड चाट एंड दही बड़ा anywhere else whenever I come you eat out without any doubt खंटी ओडिया ओडिया एबे तो बुढ़ा है गली otherwise I used to love रसगुल्ला छेना पोड़ो एबे ठीक है with age you have to cut down on sugar content otherwise मीठा रे nothing like रसगुल्ला and छेना पोड़ो I still have chaat I still have egg double egg chicken roll goody anyway not fussy मझे टाइम टे लाज लगुला कि ये झील मैंने अच्छा सामने कौन जाए गुपचुप खाइब इट वाज नॉट कंसिडर मैनली एनफ नो शरम जाके मन किया जाके गुपचुप खाके आओ when you eat chaat which is your favorite place in Bhubaneswar to eat घर पाखे अच्छी नेक्स्ट टू डालमा होटेल ओनली थिंग आगे पिला वाले 1 full प्लेट खाऊली आधा प्लेट दैट्स द ओनली डिफरेंस so coming back to this news section ଏଠି କ'ଣ ମୁଁ ମୋର ଭିତରେ ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଥାଏ ମୁଁ ପଚାରେ ସୋ ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅବଭିୟସଲି ଏଭରିବଡି ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଲିସନ୍ ଇଜ୍ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ ରିଏଲି ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ and how high is the morale after like defeating the enemy in flat 3 days? Like in flat 3 days we could know that we are way ahead of Pakistan in terms of planning, in terms of equipment. So just your perspective. Okay. To start with, I am retired. All I can say is whatever I say, it is an analysis jaha heichi. With personal experience, you can relate कि जहाँ मीडिया कोची केते सिथरे ट्रूथ अच्छी जहाँ मीडिया कोची जहाँ heichi ना नहीं because एटा गोटे जिनस इट्स इनफॉरमेशन वॉरफेयर Yes. देयर इज बहुत फेक न्यूज़ भी अच्छी एंड मे बी इट इज रिक्वायर्ड आई डोंट नो ऑब्जेक्टिव कौन थिला ऑब्जेक्टिव यह थिला कि तमें जदि एमती किसी एक्टिविटी करिवो आमे रिएक्ट करिवो प्रथम थर जब पुलवामा होता आमे जाइकरी बालाकोट इज द लार्जर अदरवाइज से जगार ना है जबा टॉप रे आई वाज प्रिवी टू मेनी थिंग्स एबे मु कहि परिबी जे इट वाज ए वेरी सक्सेसफुल हिट वेपन सेति बेले एमती यूज होता कि ऊपर सैटेलाइट रु दुश्मनी सेटा एबे क्लैरिफाई हो गला कि इट पेनिट्रेट्स गोज इनसाइड एंड देन एक्सप्लोड्स बॉम्ब रे कौन हुए 2-3टा जिनस थाए गोटे हेले इंपैक्ट फ्यूज थाए गोटे हेले डिलेड फ्यूज थाए और एक्स्ट्रा डिलेड फ्यूज थाए आउ एक्स्ट्रा डिलेड और डिलेड फ्यूज होची पेनिट्रेट करिवो तापर एक्सप्लोड करिवो माने बेसमेंट को जिबार अछि कि तो तड़े थिबे लोक हां सो तो प्लानिंग इज सेमती करा जाए कि ऊपर जदि जीव से नीटली पशिज ऊपर सैटेलाइट देखियो दुसिब नहीं किंतु से जब जाबा टॉप बालाकोट जब अटैकटा होता फॉर 1.5 मास पर्यंत से मैंने क्या नहीं गले से कौन करते रिकवर करते देखा कि आम जब इंडियन एयरफोर्स अटैक करला किसी लॉस है
जदि लॉस ही न था मैंने स्विफ्ट रिटॉर्ट कहीं करले जदि लॉस ही न था सो दैट इज क्लोज सक्सेसफुल अटैक प्रूफ हिसाब रे से दिन कौन होता क्लाउडिंग होता सो आम पाखे जो वेपन थिला सक्सेसफुल होती ना नहीं देखापी क्लाउड थिले सैटेलाइट इमेजरी भी दुसबनी और तुम पाखे जो वेपन अच्छी सेटा भी रेकॉर्ड करि परिबन काले क्लाउड दिसो सो दैट प्रूफ वाज नॉट अवेलेबल और सेमाना एलिमेंट ऑफ डिनायबिलिटी थिला कि आमु किछि हेनी कौवा मार के जंगल में मार के चले गए हाँ नाउ एज फार एज ऑपरेशन सिंदूर इज कंसर्न आई एम गोइंग प्योरली बाय एनालिसिस ऑफ मीडिया रिपोर्ट्स एंड ब्रीफिंग बाय डीजी air operations, DG military operations, DG naval operations. I will not talk much about Navy because Navy just deployed itself. Karachi ru 200 km durare, they were there. As far as Army is concerned, Army is required to go across the international border and line of control to take on targets there. से जिनसटा है नहीं कारण it never reached that stage. रहा एयरफोर्स रो कौन अच्छी कि वी आर द फास्टेस्ट टू रिएक्ट इन 2 to 3 hours योर एयरक्राफ्ट मे बी इन हाशिमारा फ्लाइंग टाइम इज 1.5 hours रेडीनेस टाइम इज बट 3-4 घंटे यू आर रेडी टू टेक ऑन बिकॉज वेपन्स जहाँ दरकार मैन पावर जहाँ दरकार एवरीवन ट्रैवल्स लोड अप एंड गो वन थिंग आम लोकों को जानियार अच्छी कि वॉरफेयर हैज चेंज्ड ओडिशावासी भल कि जानवे जे आग काल वॉर केमती होता दया नदी पाखे गोटे टाइम डिसाइड होता सनराइज पर तुम आरपटे रमें एपटे रही फाइट करूँ आ सनसेट हेले वॉर कॉल ऑफ हो आम महाभारत अच्छी ये लिखाई स्किप टू प्रेजेंट डे कारगिल कारगिल कौन होता इट वाज नॉट ए फुल फ्लेज्ड वॉर आम विथ इन आवर टेरिटोरी बम पकईक आसलु 1971 वाज द फर्स्ट वॉर जोटे कि ईस्ट पाकिस्तान अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान रे देयर वाज फुल फ्लेज्ड वॉर आर्मी संगे फाइट करला ये आर्मी फॉर द डिफरेंस बिटवीन इज आर्मी फाइट्स आर्मी नेवी फाइट्स नेवी Air Force fights all three. We have naval targets also, we have army targets also, we have Air Force targets also. Siti wale, if you go back to 1971, East Pakistan and West Pakistan, Pakistan Siti wale was not a nuclear state, nuclear weapon state. 1998 re, after the nuclear explosions both by India and Pakistan, both declared ourselves as nuclear. To take action against a nuclear to nuclear, there is something known as escalation matrix. माने मु कौन करले तारा nuclear threshold cross करिवे से nuclear use कर. Nuclear is something nobody should think of because जहाँ तारा destruction हुए, it's phenomenal, unthinkable. हमें already देखी चु हिरोशिमा रे कौन ही नागासाकी रे कौन ही. I am glad that of Sindoor pause ही not because of anything because Faujis are not there to fight a war से माने अच्छंती war deter करियो कौन हला हम ऑब्जेक्टिव थिला कि तमे जदि इमती टेररिस्ट अटैक करियो आमे तमरो टेररिस्ट लोकेशंस को अटैक करिकी विल टेक एक्शन इमती एक्शन हबो व्हिच विल बी हैव ए कॉस्ट फॉर देयर एक्शंस आगे कौन होता 2-3टा टेररिस्ट 5टा टेररिस्ट श्रीनगर पठाऊले करते 3-4 जन को मारुले बम पकईक पड़ूले इनफिल्ट्रेशन एबे कौन कले 27 जन को मारले 27 और धर्म पचारिकी कलिमा पढ़िया कहीकि मारले विच इज नॉट गुड विच एवर वे यू लुक एट इट एंड तार इंटरनल पॉलिटिक्स अच्छी मुनीर करला कौन पे करला ISI करला तार अलग रीजन अच्छी विल कम टू दैट लेटर बट मेन इंटेंशन वाज हियर इज द प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी why I am saying now because आमे कंपेयर करिवो 26/11 मुंबई अटैक कौन है
मनमोहन सिंह कौन कला किसी ना खाली गोटे डोजियर पठेदेला और से 160 उपरू लोक मरले हाँ किंतु जब पुलवामा है बालाकोट कलु माने ये ऑलरेडी सेट ए ट्रेंड आउ अटैक कोट है नॉट विथ इन लाइन ऑफ कंट्रोल लाइन ऑफ कंट्रोल होची आम इंडियन टेरिटोरी सपोज टू बी इंडियन टेरिटोरी किंतु इन पाकिस्तानी टेरिटोरी पख्तून ये एथर कौन है 9टा टार्गेट रे 3टा टार्गेट इज डीप इनसाइड पाकिस्तान बहावलपुर हो मुरीदके हो सियालकोट हो दैट इज वेयर द लाइफ बिकम्स इंटरेस्टिंग से माने केबे भाभी नथिले कि बहावलपुर मुरीदके और सियालकोट रे भी आसिकरी स्ट्राइक करे से जानते कि इंडिया एक्शन हो कारण आम मोदी बाबू बिहार जाकर कहते कि चुन चुन के मारेंगे 22 तारीख रे है 8-10 दिन मिलगला जिते भी टेररिस्ट कैंप अच्छे इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस द नोन फैक्ट कि से माने टेररिस्ट कैंप टीचिंग ट्रेनिंग स्कूल गुड़ा अच्छी अलग अलग जगह अच्छी ट्रेन करके पठाऊँ गोटे कौन से मैंने कले समस्त को हटेदेले लॉन्च बेसिस रू हेले से गुड़ा सब खाली ही जाइए से खाइले आम जब आणिकी मुर्के बाहावलपुर और ये सियालकोट रखू ये तो आसबे हिम्मत करें कारण आम हूँ न्यूक्लियर स्टेट आगे अनाउंस भी करते कि मनमोहन सिंह भी डरला कांग्रेस एज ए गवर्नमेंट यूपीए गवर्नमेंट डरला दैट इज द डिफरेंस व्हाट मोदी साहब इज डन से कौन कले तुम्हें जाओ हम देख लेंगे वेरी वेरी बोल्ड डिसीजन ये हूँ एस्केलेशन मैट्रिक्स आसे कि आम कौन कले कौन करेंगे माने न्यूक्लियर पर्यंत जीवे हेल्ला आम 9टा जगह हिट करलु एथर किसी डाउट ना कि बाहावलपुर रे हाफिज सईद रो फैमिली लोक मरले तार फोटो भी अच्छी आउ से मिलिट्री लोक आसते फ्यूनरल माने एज अ स्टेट सिटी प्रूव हो गला कि दर मिलिट्री एंड द गवर्नमेंट is supporting the terrorist because Hafiz Saeed is a internationally declared terrorist और ता फैमिली लोग मरले जो इट इज क्लोज टू 100 पीपल को कौन है कि वॉरफेयर हैज चेंज्ड इन द सेंस जहाज आउ क्रॉस करिया को पड़ोनी आजिकल जहाजर रेंज हाँ दे हैव हैमर एंड air launched cruise missiles which can go up to ranges of 100-110 kilometers जदि टार्गेट 100 किलोमीटर दूर अच्छे यू डोंट हैव टू क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर आम पटे रही रिलीज करदे सीटा जाकि सेट को वेरी देयर आर 2 थिंग्स इंपॉर्टेंट दैट हैज हैपेंड अबाउट वॉरफेयर दिस इज समथिंग समस्त बुझा पड़ो एक्यूरेसी तुम जदि गोटे बॉम्ब फटाऊच दैट बॉम्ब हैज टू हिट द टार्गेट एंड नॉट the area around it. Area around is why it is important is because you have nothing against those people staying around those people. तमु खाली terrorists को मारियो छे pinpoint accuracy जदि मारिबो so only those people will die not the collateral damage around. So these weapons which is utilized were accurate ones released from this side. Some which were very close to the this thing. Some drones were also armed drones were also utilized use इतला सीटा यूज करके we have taken on the 9 targets. Next day आमे announce भी करूँ आमे इंती करछू आमे यह भी कहूँ तुमको तमें जदि आम मिलिट्री इंस्टॉलेशन को अटैक करियो आमे भी तुम मिलिट्री इंस्टॉलेशन को अटैक करियो तांको जाना पड़ला कि मारी छथि कारण लोक मारी छथि तांके जानि छथि इंडियन एयर फोर्स और आर्म्ड फोर्सेस यूज करछे सो तांकर कौन चॉइस है इंडिया रे तो किसी टेररिस्ट कैम्प नहीं से माने कौन कले मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अटैक कर with the drones some missiles also they have fired सीटा जेबे करले we had different layers of air defense हम पाखरे अच्छी कौन S-400 अच्छी at the top yes which is looking into 300 kilometers भीतर हम पाखरे अच्छी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MR-SAM कहते देखो हम पाखे अच्छी आकाश सीटा अच्छी अबाउट 25 किलोमीटर्स तापर आमर अच्छी पिचोरा तार अच्छी अबाउट 15 किलोमीटर्स तापर आगर अच्छी स्पाइडर दिस इज 10 to 15 किलोमीटर्स एड़ा है
larger surface to air missiles. तापरे आम फर्दर क्लोज अच्छी shoulder fired igla तापरे Zeus guns अच्छे LLD guns. So सेमाने जो drones पठेले drone गुड़ा को S400 cannot pick up. Pick up करी परिवानी. MRSAM cannot pick up. Akash may pick up. Zeus gun will pick up. सेमाने जब हम ये को आसले, it was mostly taken on by terminal defenses. सेतरे अच्छी Zeus guns अच्छी, LLD guns अच्छी, Shilka अच्छी, Spider अच्छी, Akash. ये a combination of all this utilize करके तंको most of the drones को हमें तोड़ को आन लो. Some drones have come and impacted. There is no doubt about it. We have give it to them. समय यदि 200 टा पठाओ, you can't shoot down all 200. About 10 to 15% in the best of effort करले माने सेमाने आस्किरी missions which they have done. So that is one. So based on this, हमें third दिन कौन कर लो? We hit the Air Force airfields. Again, wrong notion कि हमें तंगो एयरफोर्स को ध्वंस कर दीचो. एयरफील्ड टू स्टार्ट विथ तमें जब रनवे तैयारी करछो, यू आस्क एनी कॉन्ट्रैक्टर तार एते लेयर थाए एटे बॉम्ब आसिक पड़िले इट विल नॉट डैमेज मच. जदि गोटे एयरफील्ड को ध्वंस करियो पड़े हमें दैट्स वेयर द स्टडी कम्स इन. कम से कम 70 की 80टा इम्पैक्ट करियो पड़े, 70 to 80 फॉर एंटायर रनवे टू बी नॉन ऑपरेशनल. सीटा भी नॉन ऑपरेशनल भी हबो बद्य 6 घंटा बंद हो. कारण ईच रनवे आम पाखे मध्य अच्छे दे हैव ए रनवे रिहैबिलिटेशन स्कीम. माने सेटा को केते जल्दी लाइन रो आनिमो रैपिड सीमेंट अच्छी, क्विक ड्राइंग सीमेंट अच्छी, तांकर सिस्टम अच्छी, आमर भी सिस्टम अच्छी. सो जो न्यूज़ रे आसला कि आम ताका ध्वंस कर देछु. एयरफील्ड इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स. मान तार हैंगर थिबो, रनवे थिबो, एयर ट्रैफिक कंट्रोल थिबो, रेडार थिबो, फ्यूल रो गोटे जगह थिबो, लॉजिस्टिक सपोर्ट थिबो. एमती करके विद इन द एयरफील्ड देयर विल बी अबाउट 15 ऑड टारगेट्स जाको हिट करले सेटा अनयूजेबल हो. से 15टा को हिट करियो को तुमको 4 गुणा मिसाइल दरकार. कारण व्हेन यू सेंड ए मिसाइल ब्रह्मोस जदि पठाओ तार weight of attack in terms of explosive is about 15 kgs to 20 kgs. गोटे बॉम्ब जदि पकाबो इट्स अबाउट 200 to 250 kgs. जदि तांकर गोटे ड्रोन पठेबे, आमे भी ड्रोन पठेबो तार होची 2 to 3 kgs रो एक्सप्लोसिव कंटेंट थाए. सो जिते बेसी एक्सप्लोसिव कंटेंट सेते बेसी डैमेज हुए. सो ऑन द थर्ड डे जो आमे अटैक करलु सेथरे भी यूज्ड अगेन लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च मिसाइल्स. सेटा हला ब्रह्मोस. वी हैव यूज्ड अगेन हैमर, वी हैव यूज्ड स्पाइस 2000. एमती करके मोस्ट ऑफ द इंटीरियर टारगेट्स वेर टेकन ऑन बाय ब्रह्मोस. And what was the target if not the runway? नहीं, आम हैंगर को हिट करछो, तांको रेडार को हिट करछो और रनवे भी हिट करछो. बट जस्ट टू शो, आइडिया वाज नॉट टू डेमोलिश. आइडिया वाज टू टेल देम कि भाई यू हैव तमें आम मिलिट्री को हिट करछ, आमे भी तम मिलिट्री को हिट करछ. आमर कैपेबिलिटी ए हला तमें किछि करि पारलनी. व्हाई? बिकॉज ब्रह्मोस इज सच ए मिसाइल तारो तोड़ नहीं. चाइनीज HQ-9 हो कि तंकर एयर डिफेंस हो ताको जना भी पड़लानी, हिट भी हेगला. व्हाई? बिकॉज ब्रह्मोस इज ए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल. माने तार स्पीड एत अच्छी तांगे रियलाइज करबा आगु पिकअप करबा आगु से आसी हिट कर देता. बट तार गोटे शॉर्ट कमिंग है तार पेलोड. Which is very low. पेलोड इज लो, सो डैमेज विल नॉट बी मच. स्पीड ऑफ इम्पैक्ट देखी तुम जो पिक्चर देखीच कि रनवे रे डैमेज होइछि, इट्स ए हिट ऑफ अबाउट 20 to 25 kgs ऑफ पेलोड. जदि ता बदले गोटे आम बॉम्ब पठेतांतु the crater formation would have been bigger. The crater formation very small. So small, not very small, it is small. Very small is so प्रति वेपन रो something known as mean area of effectiveness है. जदि 250 kg रो 200 to 250 kg रो एक्सप्लोसिव थो तार mean area of effectiveness about 20 meters रो गोटे crater करियो.
डायमीटर माने 10 मीटर 20 मीटर डायमीटर रो क्रिटर करियो जदि 25 केजी करियो तो 5 मीटर रो डायमीटर रो होल करियो हाँ सेटा को हिसाब करिकी आमे जब ओवर टारगेट रिक्वायरमेंट गोटे थाए सेतिपय कहली 72 इम्पैक्ट पॉइंट करले गोटे फुल रनवे रो डेमोलिशन सो जो कहछन ध्वंस कर देले फार फ्रॉम द ट्रुथ system of systems ro one not system you have taken just to show एतिके करिछि in the 3 days war now आगुटे कथा हला कि why mo कहिछि कि they cannot last more than Pakistan cannot last more than 72 hours for simple reason हम नेवी वेट करथला कराची साउथ रे नेवी goes slow about 40 kilometers per hour जदि मूव करियो within about 10-15 hours they would have come close to Karachi and done a blockade माने तांकर जो शिप रे जहाँ आसियर अछि सब बंद हे बंद हेले कोन हम तांकर फ्यूल सप्लाई डे टू डे सप्लाई आर्म सप्लाई सब बंद हे एमन जिते भी स्टॉक करले हमें जदि तांकर लॉजिस्टिक्स नोड्स को हिट कर देलु एंड व्हेन तांकर सर्वाइवेबिलिटी इज अबाउट 3 days. So I saw a meme. So there was a meme बहुत चलतला. So there was a meme on Navy. The two best aircraft carrier. I am forgetting the name. Sorry. The two best aircraft carrier with the Navy was standing side by side and then like दो भाई दोनों तबाही. विक्रांत So दो भाई दोनों तबाही and standing towards Pakistan point. So that is one. Yeah. So second is तमे जानी छ भले भाबरे कि तांकु सपोर्ट करछि दीटा देश in terms of arm बाकी सब सपोर्ट करिथिबे किंतु आर्म सपोर्ट इज कम फ्रॉम टर्की एंड चाइना चाइना कोन करिछि तांकर एवरीथिंग इज इकोनॉमी से जदि तांको वेपन्स सेल करियो चाहछि अन्य अन्य देश को दे हैव जस्ट स्टार्टेड सो तांकर गोटे PL-15 रो दीटा वैरायटी रो मिसाइल अछि PL-15E और PL-15 ओरिजिनल मोस्ट प्रोबेबली से माने यूज करछन्ती तांकर PL-15 ओरिजिनल डिफरेंस हैला या द ओरिजिनल रेंज होची क्लोज टू 180 to 2 kilometers 200 kilometers जेहेतु आम जहाज विदाउट क्रॉसिंग लॉन्च करिछि हाँ बट इट इज विद इन द जोन रेंज ऑफ देयर मिसाइल सो से माने क्लेम करछन्ती 6टा जहाज मारछन्ती बोली हमर I will not go by the numbers. I know some aircraft have taken a hit. But से जहाँ भी hit है जिनते कि DG Air Ops कहले objective we have met warfare रे महाभारत टाइम्स अंडर निजर लॉस हुए हमर लॉस हेई थिबो ए मोमेंट या मु कहबिनी केतेटा लॉस हेची कोन जाईची दैट इज सेकेंडरी एज द टाइम्स प्रोग्रेस आमे जानिमु केता हमर निजर लॉस हेची किंतु से आ गोटे जिनस कहले DG Air Ops कि ऑल आवर पायलट्स आर सेफ एंड एट होम व्हिच मीन्स जदि बा हम जहाज इफेक्ट होइछि ता पायलट इजेक्ट करछि ताको पिकअप करके घर को नि आइ सो एट द मोमेंट मु या कहबिनी कि हमर लॉस हेइनी मु या भी कहबिनी हेइछि बोली सो दैट वी विल लीव इट टू द गवर्नमेंट एंड द एयर फोर्स टू टेक ए कॉल बट you have to understand one thing कि आमे हमर भी लॉस हेई थिबो ये केबे भी कहि पारे ना जीरो लॉस है Of course. so that is one now coming to their losses हमर DG Air Ops ये भी कहले कि we have inflicted damage to their aircraft हम गोटे हैंगर देखिलु हैंगर रे बिफोर एंड आफ्टर इम्पैक्ट भी देखिछु कौन नॉर्मली हुए कि हैंगर भितरे जहाज रहबा कथा ड्यूरिंग पीस टाइम बट ड्यूरिंग वॉर टाइम कौन हुए मोस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट बाहर beside the runway ready, yes. रखती सो आमे भितरे केतेटा कौन हेची आमे जाननु कि जदि बा इम्पैक्ट हेची गोटे जहाज अछि इट विल बी ए अनसर्विसेबल एयरक्राफ्ट दारो सर्विसिंग चलतिबो हेतिबे तांको मीडिया पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट आछि कि सम ऑफ देयर एयर फोर्स पर्सनल हैव लॉस्ट देयर लाइफ इन दैट हिट दैट मीन्स सेठी गोटे जहाज निश्चय थिला टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट नॉट नोन सीटा कित दिन पर बाहरिबो एंड सम लाइफ्स हैव गॉन आमे जेमति क्लेम करछु 60टा बट से माने कोचिन 6टा 6-7 जण जाइछन्ती जाइथिबे सो ओवरऑल
सिंदूर देखा गले ऑब्जेक्टिव हैव वी मेट द आंसर इज यस लोक कहे कहीं तुम पॉज कर दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट आम ओडिशावासी खास कर आम बहुत दूर रे अच्छु बहुत दूर माने बहुत दूर So we don't understand the सो pain. तुम गोटे पुंछ लोक को पचार तांको शेलिंग होकर लोक लाइफ जाइए पचार से कहे कि पॉज करके अच्छा किया कि हमारा जान बच गया लाइफ क्लोज टू द बॉर्डर Very इज डिफरेंट हैविंग सेड दैट मु आउ गोटे जिंस कहि And war is never good. हाँ इट इज नॉट गुड इट किल्स पीपल एंड एट द एंड ऑफ इट you don't gain anything because even if you gain territory, international rules will not permit you to retain the territory. Yeah. Second thing, have to be careful for Odisha Vasi again. I am Odia, I have to tell to each and every Odia कि तमें जो भावुच सब कुछ खुश अच्छे बांग्लादेश विषय भाव बांग्लादेश नेबर है किए अच्छी वेस्ट बेंगल 3 दिन आगे तांकर गोटे पेपर बाहर कि बांग्लादेश होची ग्रेटर बांग्लादेश विषय कथा होची ओडिशा भी इंक्लूडेड अच्छी से प्रति ओडियार एटा गोटे रेस्पॉन्सिबिलिटी हम कि जदि किए बांग्लादेशी अच्छी कि रोहिंग्या अच्छी तांको आइडेंटिफाई करिकी बाहर को करिया को दिस इज वेयर यू कम इन आई टेल यू मे आस्क व्हाई हाउ डू आई कम इन यू आर ए बिल्डर राइट Yes. you have other builders, other company wala achanti. You employ labor to work. Have you ever found out 100% ki how many of them are Bangladeshis and Rohingya? The answer. No, because most of the people come from Murshidabad, they look similar. Yes. So this is where the catch is. You have to be very, very careful on 2 aspects. One is having an Aadhaar card, particularly originating from West Bengal. Is no proof. Don't believe it. Most of them are either Bangladeshis or second generation Bangladeshis or are Rohingyas. Odisha people have to be careful. Yes. More against, not against the Muslim as such, but Rohingyas and Bangladeshis. 2 थर चेक करिए 3 थर चेक करिए डोंट गो बाई कि से कम पैसा कम कर कम कर से कम पैसा नहीं कि पे द राइट अमाउंट गवर्नमेंट अथराइज पैसा किंतु तांकर बैकग्राउंड चेक करके काम कर दैट इज एप्लिकेबल अक्रॉस द बोर्ड आउ जदि स्टेट गवर्नमेंट किसी अटेम्प्ट कर दे ऑलरेडी स्टार्टेड Yes. Yes. They've already started the checks. Yes. दे नीड द हेल्प ऑफ हम लोकल पीपल जदि लोकल पीपल कोठी भी डाउट अच्छे प्लीज इनफॉर्म आखपाख लोक को ना अथॉरिटी को इनफॉर्म कर मत लगुच कि ये जो लोकटा कहूँ बांग्लादेशी कि इंडियन अच्छी मत लगुच सी बाहर लोक दिस इज वन एस्पेक्ट तुमको केयरफुल नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट एंड एन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज गोटे फीलिंग अच्छी लोकंकर कि एटा टाइम थिला पीओ की नहीं जाओ एटा टाइम थिला बालुचिस्तान को अलग जस्ट रिमेम्बर गोटे कथा एटा हे पारिबानी कि करबा कथा No, no, no. So, yeah. भाई सेवन कहले कहीं पॉज करदे सेटा नहीं पॉज करता ए कहूँ 4 दिन रे आम इकोनॉमी 20 दिन पछकु जाइए सेटा अटेम्प्ट करते इट वुड हैव बीन ए नॉट पॉसिबल आमर लॉसेस वुड हैव टेकन अस 2 वर्ष पछकु आउ जदि फुल फ्लेजेड वॉर होता इवन ए सिंगल बैलिस्टिक मिसाइल भी जाता देन एटलीस्ट 10 years पछकु जाइए So larger interest of the country, I feel it is a very good decision to have a pause. Stop this unnecessary killing. Message jaichi. That message is not only for Pakistan. It's a big message to Bangladesh. It's a message to China. एबे जो फुदकु थिला बांग्लादेश आमे नॉर्थ ईस्ट को नहीं जीवा इन बांग्लादेश रे भी ସେମାନେ already with the connivance of ISI they had started training camps to infiltration and do terrorist activities in the northeast. एबे ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି कि आमे जदि एमती किछि करिवु हम पर आसिकरी बम पड़िबो सो इट्स ए इंडिकेशन टू बांग्लादेश इट्स इंडिकेशन टू चाइना चाइना भी जानिछि कि न्यूक्लियर डिटरेंस किछि नाही आमे जदि एमती किछि गलवान टाइप आउथरे करिवु माने मारिबा हमको सेइथिपाई चाइना इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू गिव ऑल द वेपन्स टू पाकिस्तान एंड यूज इट एज ए प्रॉक्सी आगे पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर करथला थ्रू टेररिस्ट एबे चाइना होची
India against a proxy through Pakistan. All have got a global view. That is, US doesn't want India to improve. They cleared the IMF bailout. China doesn't want India to improve. Weapons doshundi. Turkey doesn't want India to improve because that's why they are giving. So, because India is already the fourth largest, going to become the third largest economy. So even Europe is not very keen. It's a question of that in international relation, permanent friends, permanent enemies not permanent interests are there. Tanko interest re India chahunante ki agu jao. Sethipai our population. This is where the opposition comes in. Opposition is about 30 to 40% of the electorate. If they don't behave, they responsibly they start asking questions. In an attempt to be against the ruling government, they are going against the country. So maybe one last question regarding Operation Sindoor is, what happened after that airbase strike? There was a declaration of temporary peace. There is something known as escalation matter. कौन हला से मैंने realize कर ले आगे हम terrorist infrastructure को hit कर ले. तापरे हमारा terrorist हमारा military रो खाली radar को hit कर ले. हमें जब इतनी कर लो से मैंने हमारा runway को hit कर ले, इम्ती जगह को hit कर ले, ज़्यादा तोड़ नहीं. तापरे तोड़ू navy आसे ची. हाँ से मैंने कहले भाई पारिबोनी. तो इतने जो कहानी चलची ट्रम्प आसिकी ये करला आम ये बहुत सिंपल सा कथा तांकु मेसेज चली गला कि आउ आगु गले आमर बेसी लॉस हो सेति भाई से डीजीएमओ टू डीजीएमओ तांके रिक्वेस्ट करले भाई लेट्स टॉक एंड इट वाज मीटिंग आवर रिक्वायर्ड आवर ऑब्जेक्टिव अचीव ही जेतला सो वी वेंट अहेड. Thank you. Thanks a lot. It was great honor to have you here. Thank you. And ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏଇ ଲାଇଫରୁ ଏଇ ଯୋଉ life, the facts you shared about the Air Force, your flying, the war. Thanks a lot. Just before we end, it's a small customary thing. What is it? We give a small gift to our guest, which is the biryani. Are you serious about it? Yes. I'm not carrying this with me. Yes. Chalo. Thanks everyone again for watching this episode. Aji episode a different thila. It was not about entrepreneurship, but तांको life history रुही तांको लाइफ स्टोरी रू ही आपण बहुत किसी शिखी पारिबे. से लीडरशिप उपरे गोटे भलो पॉइंट्स कहिले, से मैनेजमेंट उपरे भलो पॉइंट्स कहिले. लिखिकी जणातु, सब्सक्राइब करंतु, शेयर करंतु, लाइक करंतु, कुहंतु केमती लागिला ये एपिसोड्सटा. आपण को आउ एमिति एपिसोड्सटा दरकार विद मेनी मोर ओडिया पर्सनालिटीज, ओडिया अचीवर्स in different fields. Thank you.